Hi everyone, welcome back. So in the previous lesson, we discussed about what are indifference curves, what is an indifference map, and other aspects of the ordinal utility theory. Now we will discuss in this lesson marginal rate of substitution क्या होता है. So this is the slope of indifference curve. It is very important from the aspect of your exams also and otherwise also in the consumer demand theory. सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेमन टर्म्स में बताऊं तो होता है कि किस रेट पे कंज्यूमर विलिंग है एक गुड को दूसरे गुड के लिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए. ये कंज्यूमर विलिंगनेस की हम बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइसेस के बेसिस पे हम इसको नहीं अभी डिस्कस कर रहे, वो हम बजट कांस्टेंट में करेंगे. सो सपोज कि आप दो गुड कंज्यूम कर रहे हो. यू आर कंज्यूमिंग कॉफी एंड यू आर कंज्यूमिंग अ सैंडविच, या फिर आप एक समोसा कंज्यूम कर रहे हो और एक चाय कंज्यूम कर रहे हो. अब आपको बोलते हैं कि अगर आप सपोज महीने में 10 चाय कंज्यूम करते हो और से 20 समोसा कंज्यूम करते हो, तो आप बोलते हो कि ठीक है, मैं एक चाय के बदले 2 समोसे कम कर सकता हूँ. वो आप चाहते हो, ये आपकी विलिंगनेस है कि आप एक गुड के बदले कितना सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो. दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. So here we say that it refers to the rate at which the consumer is prepared to exchange goods X and Y. इसको बोला जाता है marginal rate of substitution. So marginal rate of substitution of X for Y is the amount of Y whose loss can just be compensated by 1 unit gain इन एक्स. जैसे हमने बोला कि ठीक है, मैं अपना 10 यूनिट का जो हमारा था, मैं 2 यूनिट समोसा कम कर दूंगा एक एक्स्ट्रा चाय के लिए. तो एक एक्स्ट्रा गेन के लिए बाय 1 यूनिट गेन इन एक्स हम कितना सैक्रिफाइस करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज दैट the MRS of X for Y represents the amount of Y which consumer has to give up for the gain of 1 additional unit of X so that his level of satisfaction remains same. So here we say that suppose there are two goods, good X and good Y. So we need to give up this AS amount and consume SB to be on the same level of satisfaction. आप ध्यान से देखें, ये AS क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है चेंज इन Y, और SB क्या डिनोट कर रहा है? चेंज इन X. तो अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं, मतलब डेल्टा एक्स कंज्यूम करना चाहते हैं, तो हमें डेल्टा वाई गिव अप करना पड़ेगा. तो हमें कितना गिव अप करना पड़ रहा है, कितना एक दूसरी कमोडिटी का एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए, ताकि हम सेम इंडिफरेंस मैप पे रहें. which means that loss of satisfaction due to the decline in Y should be equal to gain in satisfaction by increase in X consumption, ताकि हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहें. अगर हम किसी भी कमोडिटी की कंजम्पशन को रिड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली हमारा सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होएगा. तो सेटिस्फेक्शन जो रिड्यूस हुआ है उसका मतलब हम लोअर इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे. बट अगर हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन दूसरी यूनिट के कंजम्पशन से मिल जाए तो फिर हम सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहेंगे. और यहाँ पे कंज्यूमर किस रेट पे करना चाहता है, वो होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. thus we say marginal rate of substitution of X for Y is delta Y by delta X. Next, now suppose that changes are too small of X and Y and a tangent TT lies on them. Basically ये जो tangent हमने draw किया ना यहाँ पे, ये tangent TT है. So in this case we say that MRX is delta Y by delta X, और delta Y हमने डिस्कस किया था कितना है, AS, और delta X है SB. So we say that this is tangent angle ABS and this is equal to the tangent angle of small t capital T O. So यहाँ से हम derive कर सकते हैं that the slope of the indifference curve is equal to slope of tangent line, and hence we can say that MRS XY is actually the slope of indifference curve and thus it is equal to delta Y by delta X. ये हमने indifference curve के slope को mathematically tangent की help से derive किया है. Or it can be found out by drawing tangent at the point on indifference curve and then measuring the slope by estimating the value of the tangent of the angle which the tangent line makes with this x axis, जहाँ पे हमने good x लिया है.
So this was about marginal rate of substitution, that it is the slope of indifference curve and it is equal to delta y by delta x. हमने इसको layman terms में भी समझा है, theoretically भी समझ लिया, formal definition से, diagrammatically भी समझ लिया and algebraically भी समझ लिया. So this concept should be clear to you now. However, ये जो slope होता है ना, ये decline करता है. Why is this slope diminishing? So we say the principle states that MRS of x for y diminishes as more and more of good x is substituted for good y. For example, अगर आपके पास दो commodity है, good x and good y, पहले तो आप बोलोगे कि ठीक है, मैं 20 units of x को sacrifice करता हूँ, कितना? एक extra unit of y के लिए. फिर आप बोलोगे कि ठीक है, अब मैं सिर्फ 15 ही sacrifice करूंगा, एक extra unit of y के लिए. फिर आप बोलोगे अब मैं सिर्फ 10 ही सैक्रिफाइस करूंगा एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ वाई के लिए. तो ये जो हमारा सैक्रिफाइस वाला रेट है, ये जो डिमिनिश होता रहता है, डिक्लाइन होता रहता है, क्योंकि अब हमारे पास एक्स की कमोडिटी भी कम बच रही है, उसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. So let us now look at the formal part of this. So as consumer has more and more of good X, he is prepared to go less and less of good Y. Let us see this. So in this diagram, as you can see, on the x-axis we have taken good x, on the y-axis we have taken good y, and this is a downward sloping indifference curve. So here we say that this is delta y, delta x. So initially, consumer is willing to forego delta y1 divided by delta x1. Then he is willing to forego delta y2 for delta x2. Then delta y3, delta x3. But क्योंकि अब यहाँ पे हमारा रिड्यूस होता रहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच डिमिनिश होता रहता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये चीज हमारी रिडक्शन में जाती है. दिस इज टर्म्ड एज एक्चुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट दिस इज डिक्लाइनिंग. This means that for each successive commodity of y, less of x is sacrificed. So here we say that delta x1 is less than delta x2, is less than delta x3, is less than delta x4. But y remains same. वही चीज हो गई ना, यहाँ पे this is less. So we say this represents diminishing marginal returns to scale, marginal rate of substitution. So we say that since the slope of indifference curve is diminishing, it is declining, hence the indifference curve is also downward sloping. We can also say from this aspect also. Otherwise, there are other reasons that is dependent upon the properties. We will discuss the properties in the next lesson. I'll give you the PDF of this lesson in the description. You can download it and you can go through the notes. Also, there is a Telegram link. You can join that Telegram link wherein I provide various other notes that will be helpful to you. And there are other playlists also. You can find out other topics जो आपको required हो. And in case if you feel that some other topic or other subject needs to be covered by me, let me know. I'll try to cover it. All the best for your preparation.